You want to design cars. I wanted to become a car designer. पहले 10 साल के अंदर ही you made an aquarium. We put the aquarium on poles. So it started from one place and it moved all around the restaurant. रेस्टोरेंट में सबसे बड़ा aquarium. सबसे लंबा aquarium. You got the Limca record. Yes. What is this out of the box design approach? Out of the box is that what is the limiting conventional thought process? Box is the conventional thinking. Consume a very expensive piece of real estate. Discussing with one of my clients. So he wants me to make a cocktail rooms of India that are all themed in red. First instinct was to जो सोच और जो एनर्जी होती है ना, वो एक डिजाइनर की होती है. भले ही वो ऑफिस पर बैठा हो, लेकिन whatever we are thinking is in the service of अर्ली मॉर्निंग वर्क्स और लेट नाइट. late. Mountains or beaches for the vacation? Why mountains? Welcome to another episode of Design Beyond Walls. मैं विशाल कुकड़िया आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ डिज़ाइन बियॉन्ड वॉल्स के ऊपर. आज हमारे मेहमान जो यहाँ पर शो पे आ रहे हैं वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है. उन्होंने अपने 25 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मोर देन 25 प्लस इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड्स जीते हुए हैं. इन्होंने अपनी डिज़ाइन फिलोसॉफी से राजस्थान ही नहीं बहुत सारे जगह के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स प्रूव किए हुए हैं. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्किटेक्ट ध्रुव गुप्ता जी की, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से पास किया हुआ है और वो फाउंडर है ध्रुव.design के. लेट्स वेलकम आर्किटेक्ट ध्रुव गुप्ता जी का. आपका लॉन्गेस्ट एक्वेरियम के लिए यू गॉट द लिम्का रिकॉर्ड. Yes. Here and Delhi. Delhi. Lovely. अब उस बात को भी 16 साल हो गए. So it's been 16 years back. So आपकी जर्नी के पहले 10 साल के अंदर ही you made an aquarium. हाँ. Lovely. Aquarium, residential, उसके अलावा कौन से डिजाइनिंग पे? So aquarium क्या था कि aquarium नहीं था. It was part of a restaurant. So part of a रेस्टोरेंट और उस रेस्टोरेंट में सबसे बड़ा एक्वेरियम था. सबसे लंबा एक्वेरियम. सो बड़ा सबसे नहीं था, लंबा सबसे था. So that was a very interesting thing that it was in a mall near in Rithala in Delhi. It was near an aquatic park. Okay. And my client said इसमें कुछ some aquatic theme should be there. Why don't we put an aquarium? So I said okay. And normally what I try to do, extrapolate a design element. So I see how big can I make it, how more impactful or how more bold I can make it. Okay. So हमने क्या किया कि हमने उसको we put the aquarium on poles. Aquarium on poles. On poles. So it started from one place and it moved all around the restaurant. And it was 166 feet long. उसकी पूरी running length 166 थी. Wow. And it just occurred to me कि हो सकता है इंडिया का longest हो. हाँ. It was my idea that we could probably be the longest. So I wrote to Limca. Okay. Please check करो कि ये longest है क्या. हाँ. So वो longest निकला. Wow. So at time the biggest India was probably Sahara Star in जो airport के पास जो है ना मुंबई में. So that was a huge aquarium where they had these diver like scuba diver mermaids who would in fact human mermaids who would go, and so that was the biggest aquarium at that point of time, but we were the longest. I think if I remember 1800 square feet space. 1800 square feet space. Yes. What is this out of the box design approach? Okay, so what I try to do is to first see what the box is. So the box is. Okay. So the box is the conventional thinking. Right. And I see how I can and there are certain advantages and disadvantages to that conventional thinking. So I see how do I from the conventional thinking, how can I go to the unconventional, from the conventional wisdom to the unconventional wisdom. So I see how I can break this rule or how I can not do what is normally being done, and what does that sort of bring to the project. Okay. One of my very first projects, it was a second project.
So normally what you would do is you would hide a kitchen against. So it was a 3-side open ice cream parlor. And Okay. normally we would hide the counter towards the back side, Right. or Right. So I got it in the front. You For got some it in reason, the not for front. the heck of it, but it had certain advantages. But had I not broken out of the box, I would have never done it. So that out of the box is that what is the limiting conventional thought process? Let's step out of that thought process and let's see what is then possible. So this aquarium also is, like, you could say, is it is an out of the box idea, because nobody will put it on a pole. So I had never imagined that I will put it on a pole, but it so happened that if it is such a long aquarium, you cannot consume a very expensive piece of real estate. True. So we said, okay, let's do what can we do? So we can hang it, or we can put it on pole. So we designed the whole design of that restaurant came about out of that idea that let's put these aquarium on poles, and then the furniture is part of that pole and things like that. Then it's become the more integral part of the entire theme over there. Correct. It was the theme. I mean, it became the theme. And we became had the never, when I took the project, I never thought I would do something like that. So, and since I've had these experiences so many times, so now as a matter of practice, I start looking what is the box and is there something to be found out of the box. Understood. So correct me if I'm wrong कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, देन यूल सी कि ये नॉर्मल तरीके से अगर होता तो ये कैसे किया जाता, दैट बट आई विल नॉट डू इन दैट वे, व्हाट कैन बी द डिफरेंट अप्रोच ऑल टुगेदर फॉर दैट्स बिकम एन आउट ऑफ द बॉक्स फॉर यू. राइट. गॉट इट. एंड नाउ दैट द फर्स्ट पार्ट दैट यू से इज आई डोंट इवन डू दैट, because अब इतनी आदत हो गई है. So you don't I will not do the regular stuff. I will see, okay, what, only today there was a meeting and I was discussing with one of my clients. So he wants me to make a cocktail room for his project. So he was showing me that there are the top 10 cocktail rooms of India that are all themed in red. They all are themed in red. So my first instinct was to not do it in red. Okay. So that is, I don't know whether that is at this point of time, whether it is the right thing to do or not to do, or it will be effective or not. But that has now become that has become my box now. Got it. So the first approach principle is something like it's been designed in your mind कि जब भी मेरे पास कुछ चीज आएगी तो वो ऑटोमेटिकली अब आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली ही यू नो कि इसमें मुझे क्या ब्रेक करना है और कहाँ पर उसको फिर से दूसरी जगह पर कैसे कनेक्ट करना है. Correct. And that's why you are known for out of the box approach in the I don't know how much I am known for that, but yes, that's what we try to do. How you begin the entire journey? As I can see, your study has been completed before 25 years back. So how you started your journey altogether? So I am a second generation architect, and my mother, I worked with my mother, and she again is a reputed, very leading architect of Jaipur. She is the first lady architect of Rajasthan. First interior designer who started the field of interior design in Rajasthan. She did the Palace on Wheels trains and early 80s and all of that. And so we don't belong to Rajasthan. So my dad got a job in Jaipur, and that's how we came here. And then she set up her practice here, and then she studied the arts and crafts of Rajasthan, and she was using that. And so I never wanted to be an architect, to be upfront. I knew that this is one thing that I don't want to be, because my mom was very good, and I was like always कि मैं इतना अच्छा तो मैं नहीं कर सकता. Like I mean, as kids we would go to the muhurats of the house, and everybody would be oh, this is wonderful and all of that. So we grown up like that, and I thought, oh, मेरे बस की तो I don't think I can ever be like that good. So but something, some conversation, something happened in the head, and then I said, I made up my mind, okay, then I will do architecture. I don't know what happened. Maybe I read Fountainhead or something. कुछ आपको याद आ रहा हो कि ये शिफ्ट कहाँ से हुआ, जब आपको बहुत क्लियरली ये था कि मुझे करना ही नहीं है, लेकिन स्टिल you went with that, and your heart and passion is over there, and everybody feel about that. Okay, so what my passion at that time was, I wanted to design cars. You want to design cars? I wanted to become a car designer. So for the lack of better understanding, I thought कि मैं mechanical engineering में जाऊँगा तो मैं कार डिजाइनर बन सकता हूँ. Understood. So
उस जमाने में एक बुक आती थी 10+2, आफ्टर 10+2 व्हाट, Okay. आई एम टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट टाइम्स, जब इंटरनेट नहीं था. So उसमें था कि what are the engineerings, and there were certain colleges which were offering automobile engineering and all of that. But so, my mom advised me that your inclination is not towards the mechanical part of it, Right. but right. for the aesthetics part of it. That is what used to inspire me more. I was never into the horsepowers and the torque of a Engine car. and everything. So somehow I figured that if you are an architect, you can design anything. She said you Yes, can, as an architect, you yes, can design yes, anything. Yes. So I think that sort of got a hook. And then when I got into the college, in fact, in spite of not my best intentions, but I topped the SPA national entrance exam. So I have never topped anything in my life before that. The best thing that I ever did was a second position in my 9th standard. Otherwise I was 7th, 8th, like that. That was I was in the top, like say 20% of my class, but never topped. So I hadn't, and to be on a tangent, my parents used to tell me कि तुम जब first आओगे ना, तो छोटा था तो कि सारे सारे we used to go to this toy shop, सारे खिलौने खरीदवा देंगे तुम्हें. अच्छा. And I was हाँ मैं आऊँ, पढ़ता लिखता इतना था नहीं. So by mistake I topped this exam. और इसमें भी ये हुआ कि I had already got through IIT खड़गपुर, और वहाँ पर आर्किटेक्चर मुझे मिल गया था. And we were supposed to go to खड़गपुर. दिल्ली से ट्रेन होती थी उस जमाने में. So I had taken teen का अपना बक्सा, and then we have to just check the result at SPA. Okay. And then next day was our train. So अगर SPA में हो जाता तो हम लोग जयपुर वापस आ जाते, और नहीं होता तो हम खड़गपुर निकल जाते. तो पूरा क्लाइमेक्स वाला. हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग. सो मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पर एक लिस्ट थी, तो उसमें मेरा नाम टॉप पे लिखा हुआ था. तो मैंने कहा यार वेटिंग लिस्ट 1 पे तो आ गए, तो चलो वेटिंग लिस्ट 1 पे आ गए तो हो जाएगा. फिर मैंने उसके ऊपर पढ़ा कि क्या लिखा हुआ है. तो उसमें लिखा हुआ था कि द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड इन द जनरल कैटेगरी. इट टुक मी 20 seconds टू फिगर आउट कि ये हो क्या गया है, बिकॉज नेवर इन माई लाइफ, और कभी ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं. तो इट वॉज टोटली बाई फ्लूक दैट एंड इन माई आई वुड से कि मैंने IIT लेवल की पढ़ाई करी हुई थी, तो शायद दैट वॉज एट माई एडवांटेज इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, इन दैट पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. एंड देन फर्स्ट मंथ आई हेटेड इन द कॉलेज. मुझे फिर लगा कि मैं गलत में पहुंच गया हूँ. अच्छा, SPA में आपको लगा कि मैं गलत जगह पे पहुंच गया हूँ, ये कैसे निभेगा ये, और 5 साल का कोर्स होता है. थर्ड मंथ देन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू, तब कुछ समझ में आने लगा. या आपको यू कुड सी दैट ओके देयर इज, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट एक्चुअली आफ्टर 2-3 months. ओके. उसके पहले मेरे का अटेंशन स्पैन इतना नहीं था कि मैं बैठ के पढ़ूं कि 1-1 घंटा 2-2 घंटा. वो कभी मैंने जिंदगी में ड्यूरिंग माई प्रेप फॉर IITs एंड ऑल तब मैंने थोड़ा बहुत किया, बट हिस्टोरिकली आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट. और फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट एंगेज्ड इन द वर्क दैट वी वर डूइंग इन कॉलेज. दैट इफ यू कॉलेज में मिला कि चलो आप कैंटीन डिजाइन करो, सो वन कुड गेट इट वॉज नॉट वर्क एनी लॉन्गर. फिर आप उसको कर रहे हो, उसको आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो, आप रात भर आप जग के काम कर रहे हो. सो दैट वाज अ टोटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर एनी स्टूडेंट, क्योंकि आपको पढ़ाई के लिए एक आपकी इमेजिनेशन होती है कि पढ़ाई ऐसी होती है पे जो स्टडी होता है. तो हमारा जो डिजाइन का जो स्टडी होता है वो वैसे आउट ऑफ द बॉक्स है एक तरीके से. राइट. So that's how it started. And then towards the end of my career, at end of my college, again I was sure that I do not want to do architecture. कि अब तब वो multiple times you felt like that कि मुझे architecture में नहीं करना. तो उसकी कहानी ये है कि I went for my training in the US, and I went to, so that was the time when these computers 3D generated views had like they were in their infancy. So I worked in a studio there which was an illustration office. It was not an architecture. They used to illustrate for architects. So they had these artists who would brush paint very nicely, watercolor and things. And there was a small department who was just developing 3D. तब तक mainstream बिल्कुल नहीं था. अच्छा. So normally वो हाथ से बनाते थे, और वो उनका पहला 1-2 प्रोजेक्ट अब करने वाले थे. So initial stage was there for them also, and they knew that I knew couple of software, so they उन्होंने बुला लिया मेरे को, and then they were training me and I was training them actually. Okay. तो मैं वहाँ पर 7 घंटा मैं काम करता था,
और 1 घंटा मैं उनका एक बंदे को ट्रेन करता था कि ये सॉफ्टवेयर में ऐसे 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 करो एंड ऑल ऑफ दैट. सो दैट वाज वेरी वेरी, इफ आई मे यूज द वर्ड, सेडक्टिव फॉर मी. कि बहुत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि आपने कोई चीज़ मॉडल बनाई और एकदम से 3D रेंडर बन के आ गया. एंड यू फील सो नाइस कि हाँ यार कितना अच्छा लग रहा है. Right, अब तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, अब तो सोच के और AI में बट दैट वाज लाइक अ वेरी वेरी 100%, फ्रेश एक्सपीरियंस. एंड आई सेड कि आर्किटेक्चर में इतनी मेहनत, इतना बनाओ, फिर सालों लगते हैं. आई वांट टू डू दिस इन माय लाइफ. एंड उसी ट्रिप पे ये हुआ कि वी वेंट टू सैन फ्रांसिस्को एंड माय मामा न्यू समबडी एंड वी वेंट टू पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो. ओह, सो दैट वाज अगेन, इट वाज अ वेरी यूटोपियन. बैठे हुए हैं लोग, किसी का कोई एनिमेटर है, उसका पैर टेबल पे है, वो माउस चला रहा है, कुत्ता बगल में है, पैर टेबल के ऊपर है. सो आई कुड नेवर इमेजिन कि यार ऑफिस जैसे डिज़ाइन को नहीं इमेजिन किया था कि पढ़ाई ऐसे हो सकती है, तो ऑफिस ने इमेजिन किया था कि ऐसे ऑफिस भी हो सकता है. राइट राइट. And they were doing cool stuff. They were at that point of time, they were doing, it's a Bug's Life. अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो Toy Story was the Pixar's first. Yeah. So I said no, ये करना है. अब आर्किटेक्चर नहीं. So that triggered you. That triggered me कि अब ये करना है. अब आर्किटेक्चर छोड़ो, आर्किटेक्चर अब पास कर लो. और अब तो मेरा जो उसके बाद ये 4th ईयर में, हमारी ट्रेनिंग 4th ईयर में थी, मैं आया वापस और मैं मतलब कि आई गॉट माई सेल्फ कंप्यूटर एंड देन आई वॉज डूइंग ऑल ऑफ दिस स्टफ. अपने कंप्यूटर उसके लिए बना रहा था, अपने जो कॉलेज का काम है वो भी कर रहा था और भी कर रहा था काम, फोटोशॉप एंड अदर एनिमेशन थिंग्स लाइक दैट. एंड मैंने अपने सारे गैंग, जो भी हमारा गैंग था, आई सेड कि आर्किटेक्चर बेकार है, लेट्स गेट टुगेदर एंड वी मेक अ कंपनी एंड वील मेक मूवीज एंड स्पेशल इफेक्ट्स. और वो it was so fresh that time. Toy Story 95 में आई थी. By the time I came to 5th year तब वो Bugs Life आ गई और बहुत सारी चीज़ें आ गई. It's very exciting. अब तो normal हो गया है. That time it was very. But we are talking about 25 years back. उस time पे तो this was very interesting, very exciting. Yes. And this is very मतलब बहुत limited लोगों के लिए इसका access था उस time पे. Correct. हमारे यहाँ पे तो इंटरनेट की शायद एंट्री भी नहीं हुई थी उस टाइम पे. वेरी अर्ली फेज वाज देयर. आई रिमेंबर तो मैं कॉलेज से तब वो इंटरनेट कैफेज होते थे. यस. और वो आई डोंट नो 50 रुपए घंटा या 50 रुपए आधे, 50-60 रुपीस. गो एंड डायल अप मॉडेम से यू कुड चेक सम मूवीज. तो होती नहीं थी, यू कुड जस्ट रीड टेक्स्ट. राइट. सो मेरा पूरा पोर्टफोलियो जो मैंने कॉलेज के बाद बनाया था, वो ऑल ऑफ हैड नन ऑफ माय आर्किटेक्चरल वर्क. उसमें सब मेरा ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन, ऑल ऑफ दैट स्टफ वाज देयर. सो आई कुड से कि डिजाइन जो था ना वो आपके ब्लड में था. इसके लिए शायद भले आप कॉलेज में कुछ भी डिजाइन कर रहे थे, बट आप डिजाइनिंग कर रहे थे. करेक्ट. तो दैट इज समथिंग यू वेरी एक्यूरेट. सो आई वाज डूइंग ऑल, उसमें सब मेरा. सो कॉलेज में जैसे फेस्टिवल्स होते थे तो आई वुड डिजाइन द स्टेज का प्रॉप, कि बैकड्रॉप डिजाइन कर रहा हूँ, उसका कुछ और डिजाइन कर रहा हूँ. उसमें दिमाग ज्यादा लगता था. तो वी यूज्ड टू, बीइंग इन दिल्ली, वी वुड गो टू मार्केट्स कि जो को पाइप खरीद के लाओ. एक हमने स्कल्पचर बनाया था फ्यूज. हमें लैब होती थी उस जमाने में, ट्यूबलाइट्स होती थी. तो 4 फुट की ट्यूबलाइट होती है जी. तो वो एक बार हम छत पे गए तो ट्यूबलाइट का पूरे फ्यूज ट्यूबलाइट के बंडल पड़े हुए थे. ओके. तो मैंने कहा यार कुछ हम लोग सोचा कुछ करें यार इसका. हाँ. तो वी मेड अ फुल 3D स्कल्पचर आउट ऑफ दैट फ्यूज ट्यूबलाइट. उसको हमने उसका पूरा स्पेस फ्रेम बना दिया. वाओ. सो वी हैड दैट काइंड ऑफ अ ऑन द दैट जुगाड़ू काइंड ऑफ अ थिंकिंग ऑन. वो किताबों में और ड्राइंग में नहीं था, वो एक्चुअली वी वर डूइंग फिजिकली. अंडरस्टूड. अब मुझे आपकी पहली एक पुरानी बात भी अगेन कनेक्ट हो रही है कि इट्स नॉट अबाउट दैट कि मैं कुछ सोच के उसको बनाऊंगा. हाँ. बनाऊंगा, सोचते जाऊंगा, वो साथ साथ में सारा चीज बनता जाएगा. करेक्ट. सो इट हैपेंस इज दैट आई थिंक, आपकी इस बात से मुझे एक जो चीज अपने बारे में रियलाइज हो रही है, दैट आई एम वेरी अलाइव टू अ सिचुएशन. राइट. तो मैं कोई सिचुएशन, कुछ भी कोई स्टेटस को होता है, कोई चीज़ मैं देखता हूँ तो उसमें से कुछ बहुत सारी पॉसिबिलिटी निकलती दिखती है मेरे को कि यार ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. बिल्कुल. सो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज अंडरलाइंग, विच फॉलोड मी इनटू माय प्रोफेशन. तो अब कोई जैसे प्रोजेक्ट आता है तो वही आउट ऑफ द बॉक्स की, इसमें ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. एंड विद एक्सपीरियंस यू ट्राई टू, इट्स नॉट फॉर द हेक ऑफ इट, यू ट्राई टू सी कि ओके व्हाट सर्व्स द प्रोजेक्ट. कि जो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो वो प्रोजेक्ट सर्व भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है. Now how I got back into architecture. क्योंकि कर तो मैं आर्किटेक्चर हूँ. बिल्कुल. So I applied for universities. I got got my admission, and my visa was refused twice. Okay.
तो मैं 2 साल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था। तो फिर जो है मैंने अपने फ्रेंड के साथ जो हमने सोचा था कि हम ग्राफिक स्टूडियो शुरू करेंगे, एक कंपनी बनाएंगे। तो हमने वो कंपनी बनाई और हमने ग्राफिक स्टूडियो शुरू किया। अच्छा। और हमने बहुत उसमें वेबसाइट्स बनाए। एकल विद्या एक वेबसाइट थी जो उस टाइम पे देन प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्होंने इनॉग्रेट करी थी। समहाउ दैट वी गॉट दैट, उसकी भी एक अलग कहानी, आई विल नॉट बोर यू विद दैट। सो वी डिड दैट, देन वी डिड ग्राफिक्स, बहुत कंपनियों के लोगोज बनाए। जयपुर में प्रणामी अगरबत्ती इज़ अ वेरी फेमस ब्रांड, सो इवन वाइल आई वाज इन कॉलेज वी हैड स्टार्टेड डूइंग बॉक्सेस फॉर देम। सो उनका लोगो जो है आज की मार्केट में जो चल रहा है वो मेरा 26 साल पुराना मेरा बनाया हुआ है। वाव। और उनके डब्बे भी वो चल रहे हैं, बहुत सारे डब्बे वो मेरे 26 साल पुराने बनाए हुए, डिजाइन करे हुए, वो अभी भी चल रहे हैं। सो वी यूज्ड टू डू दैट, वेबसाइट्स, एनिमेशन। इनक्रेडिबल। So- 26 years बैक की हुई डिजाइन अभी भी मार्केट के में चल अंदर रहे हैं, है। yes. दैट मींस इट्स इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। इन ऑल फेयरनेस ना, मुझे वो डिज़ाइन कोई ऐसा अगर मैं देखूं तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, बट ठीक है, इट सर्व अ सर्टन पर्पस। अगरबत्तीज यू नो सोल्ड टू अ सर्टन, बट इट इज एज अ डिजाइनर इट इज सेटिस्फाइंग कि हाँ कोई चीज ट्रेडिशनल फॉर्मेट में तो वो हो ही रहा था ना। हाँ, You और just broke it। वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में हो रहा था। वो जो हमने डब्बे डिजाइन करे थे वो ट्रेडिशनल उस जमाने में जो जिस तरह से वो जाली वाला पैटर्न और मेहराब और वो सब के पैटर्न बक्से डब्बे होते थे, तो वी हैड अ वेरी मॉडर्न, so that sort of has stood the test of time and they are still using it. So that happened, and then my partner got admission in the US, so he went. ओके। तो वो अपने मास्टर्स करने चला गया, मैं यहाँ अकेला बचा। एंड what got me back to the profession was that there's a client who came to us. He was an NRI. So whenever a client comes, we give him 4 options, 4 options कि हमने आपका ये बनाया and you can discuss. सो मॉम सेड कि भाई देखो, तुमने आर्किटेक्चर किया है, तुम एक नक्शा तो तुम आई नीड योर हेल्प, तो एक नक्शा तुम बना दो और बाकी में नक्शे मैं बना दूंगी फिर, क्योंकि ही इज कमिंग टुमारो और डे आफ्टर एंड आई नीड योर हेल्प। वी डिडंट हैव मच स्टाफ, वी हैड जस्ट शिफ्टेड टू अ न्यू ऑफिस एंड वी वर रियली लीन ऑन स्टाफ, और मे बी 0 स्टाफ था शायद उस टाइम पे। ओके। सो एक नक्शा मैंने बनाया, एक नक्शा उन्होंने बनाया, 2-3 उन्होंने बनाए इनफैक्ट। सो द क्लाइंट सॉर्ट ऑफ वाज liking mine, and mom very very cunningly she said हाँ यही बढ़िया है। so that's how I can imagine that moment। so and he was a very nice client, very very generous to me, and so फिर मुझे मजा, so I fell in love with architecture all over again। तो वो किया, फिर उसके बाद एक और प्रोजेक्ट किया, फिर तीसरा प्रोजेक्ट we did in Delhi। उसके ग्रेटिफिकेशन मिलता गया और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया कि on my third project I was designer of the year in Inside Outside in 2003। I was on the cover of a magazine। तो फिर उसके बाद वो मतलब कि it was a for a kid it was like one of the very I think it came too early in my life, but it was a very very you felt कि हाँ कर सकते हैं। So it was encouraging also, and it was I would say good only. I would not say definitely it's not good। There are few people are imagined to live such kind of life or such kind of achievement in their life कि यार कई बार लोग सोचते हैं कि मुझे पूरी मेरी लाइफ में एक उस तरीके का अवार्ड मिल जाए, and that और वो भी अनएक्सपेक्टेड था। लाइक व्हाट वाज ब्यूटीफुल अबाउट दैट प्रोजेक्ट वाज दैट आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड टू विन। फिर उसके बाद तो एक्सपेक्टेशन हो गई, क्योंकि भाई आपको पता लग गया कि हाँ भाई आप पार्टिसिपेट करोगे और आप में कैपेबिलिटी है कि आप compete कर सकते हो। जीतो नहीं जीतो अलग, बट एक यू गेट आइडिया, आपको वो एक आइडिया लग जाता है कि इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। करेक्ट। देन आपकी एक्सपेक्टेशन उसके साथ बिल्ड हो जाती है, बट विदाउट एक्सपेक्टेशन जो मिलता है दैट करेक्ट। एंड आई वाज एट दैट टाइम द यंगेस्ट टू गेट दैट अवार्ड, एंड जो फाइनलिस्ट थे वो बहुत नामी नाम है आज की तारीख में भी, दे आर वेरी बिग नेम्स। सो इट वाज वेरी सैटिस्फाइंग। सो आई बिलीव जो आपके स्टूडियो के साथ ध्रुव.design लगा हुआ है, इट्स वेरी करेक्टली इट इज बीन फाउंडेड। सो ये कैसे आपको आइडिया हुआ कि लेट्स गो विद दिस ध्रुव.design? सो हमारी कंपनी का, जब हम कॉलेज में थे तो हमारी कंपनी का नाम था रियलिटी स्विच स्टूडियोज। रियलिटी स्विच स्टूडियो, टेक लाइक इट वाज अ टेक लाइक ऑल दीज ग्राफिक्स एंड ऑल कंपनी।
तो इसलिए स्टूडियोज था एंड ऑल ऑफ दैट था, until लीगली अभी भी वही नाम है. अच्छा, फर्म नेम अभी भी वही लीगली जो है, जो जीएसटी पे लिखा हुआ है, वो रियलिटी स्विच स्टूडियोज ही लिखा हुआ है. So my mom advised me. She said that, you know, so since I was getting awards every year and every other year, so she said that nobody can connect your company's name to your name. True. So why don't you name your company after your name? Okay. So that if suppose you say, oh, somebody's announced that Dhruv.design has won, so at least there is some connection. Suppose it says that Reality Switch Studios has won, then there is little connection. Got it. So that's what, and her company's name was Vastuank. So also what she was talking from her experience, that nobody really knows her company. Everybody knows her as a person, Individual as an name. individual. So maybe she was coming from that's, you know, that kind of a thought process. Got it. और फिर एक और उसमें है कि क्योंकि हम when I got out of college, that was the .com time. 2001, 2002, that was the time. 2000. 2000. Very हमने true. इनफैक्ट Very स्विच को true. 99 में switch.com is still our domain name. Switch.com is डबल वी विद डबल वी, डब्लू नहीं था. तो हम लोग का ना वो माइंडसेट तब से वो एक ना .com की कोई वो होना चाहिए, कोई एक कोई उसका URL होना ही चाहिए. Right, तो कोई नाम सोचो तो उसका URL होना चाहिए. So Dhruv, I could not get Dhruv.com, I got dhruvgupta.in, but you get a .design domain name. okay. So there is, you can get a like whitelion.design. Yes. So I said, yes. okay, so it is my name also and it is my URL also. So that's how it sort of Lovely. happened. And it is the dot is again that out of the box, a little shift. True. So that's By it. the way, we also tried to get the switch.com name available when we I can sell it to you. It's now your IP. It's 25, 26 year old IP now. और आपको मैं बताऊं, उस जमाने में somebody offered us, I think $5,000 for that name. Wow, $5,000 in that era. In era. तब खैर डॉलर का रेट कम था. हाँ ठीक है, वैल्यू तो But हाँ, वैसा value ही भी है. थी. It was a big sum of money, but we chose not to. Like ठीक है यार, I mean we will make it much bigger. So that's how we sort of, काफी आपने ना मेरी memory lanes को jog कर दिया. मतलब I'm totally in that 25 years ago वाला But mode. that's good ना, क्योंकि वो मोमेंट जब आपको याद आ रहे, then you are enjoying. हाँ, मैं ये yes, जर्नी yes, से yes. पास हुआ हूँ. मतलब Yes. I was hearing something और उसमें ये आ रहा था कि we always compare with somebody else. कि वो यहाँ पर है और मैं यहाँ पर हूँ. Ideally it is not the right comparison. Right comparison is that where you started. Because you need to see your journey कि मैंने कहाँ से start किया था and मैं आज कहाँ पहुँचा हूँ. क्योंकि आपके आगे कोई ना कोई तो हमेशा होने ही वाला है. That's no point for that. Correct. No, I totally agree with you. मैं तो अपने आप को बहुत कंपेयर करता हूँ और लोगों से. Having said that. So any other turning points in this entire 25 years of journey which is very remarkable turning point? When I think about it, I don't think there was any turning point after that. उसके बाद कोई lane change नहीं हुई. उसके बाद सिर्फ then I became very very single minded about design, about creating different, like नई चीजें करने के लिए. So and I was encouraged by my clients. I was projects did well. I would not say there was any turning point. There were minor points where you felt that okay, I started standing for a project more. Like I would, in the face of disagreement. Like my earlier, it is reversed actually. जो मैं in my earlier professional life, I did not have too much resistance from my clients. Too much resistance from your clients In terms of newer ideas and things like that. Okay. Somehow in my experience, I feel I have, in spite of all the accomplishment and awards and things to show, I have much more resistance now. Now you have resistance. They have resistance. They have resistance. So now if I would have had that kind of a resistance that time, I don't think I would have might have succumbed, or I would say okay, ठीक है नहीं करेंगे, whatever. Now 5-6 years I've started really standing for the outcome of the project. Because you can see, client cannot see. True. So there was one project where I did agree to the client and I said कि ठीक है मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है अब मैं क्या करूँ? Like that's what my internal thought was.
and the project did not turn out the way I wanted to, and I felt very hollow so and I figured कि अगर मैंने कुछ भी किया होता, and if I would have stood for that project at that point of time, I would have whatever I would have yes done. yes guilt के साथ फिर वो जीना is So very now bad about yourself. Now I stand for the project. I would say, I would not say all the time, but mostly I would stand for a project, and I can be like a father to my client. Like that. It can That's be like pretty something I heard. I can be the father to my client. Yes. Wow. So sometimes, because your parents were your parents, right? Right. They made you right. go to school. True. So true. if they were what not is there, required is required. So वो हम ही, like if you start relating, so not from a domination point of view, Understood. but from a caring point of view, कि अब उनको नहीं पता है या उनको नहीं समझ में आ रहा है, and then whatever, so our parents cajoled us, they dominated us, they manipulated us, whatever. So all those arsenals I also use to various degree, enrollment भी करता हूँ. So I think I sort of, और उसमें मजा आता है कि you take that stand, then it project Every gets day new completed. type of challenges would come there, and हाँ. that And then the superlative appreciation you get from the client, उसका कोई, I don't think there is a bigger kick in life. वो एक और kick is a very shallow word, but I think fulfillment जो उससे मिलता है वो I am just personally addicted to that you able to fulfill somebody's dream, and it's unbelievable for them, and out them not expecting it. So end of the project, they might be coming back to you and saying that you were right at that point when you stood up for the project and did not let me do this, but it happened. ये And now pompous statement है मेरे behalf पे, but almost without exception this happens now. Past 7-8 years. So 7-8 years, yes. So this is now, because अब वो होता है ना, मैं उनको I tell them, and then we have good relationship with my client. ऐसा कुछ लड़ाई नहीं होती है. It's something which I feel that I can do. I mean, I have, in my journey, I have got that capability to do that. So that is something which I have nurtured, and it works well for my client. जिस दिन ऐसा होगा कि client बोलेगा कि आपने ठीक नहीं किया मेरे साथ, या आपने ज़बरदस्ती कर दी, probably, then I will rethink this. But अभी तक तो नहीं हुआ है ऐसा. because I believe you know your designs, you know your vision is very clear about that particular project, that I want to achieve this much of level, and when you put your heart and soul over there, and then the client is also being the victim of that na, that he is also वो देख रहा है कि यार क्या जान लग रही है इस इंसान की इसके पीछे. शायद क्लाइंट मेरे हिसाब से पैसा लगाता है, लेकिन जो सोच और जो एनर्जी होती है ना, वो एक डिज़ाइनर की होती है. भले ही वो ऑफिस पे बैठा हो, लेकिन हर मोमेंट पे जब वो चीज़ उसको चाहिए होती है और वो नहीं होता है, तब वो एक जैसे एक अलग सा फील डेवलप होता है, दैट, और वो क्लाइंट को समझ में आता है. I like to add something to that. So आपने कहा कि I have a vision for the project, and I have a, so it is, we spend a lot of time with our clients. तो हम लोग घंटों मीटिंग्स होती हैं हमारी क्लाइंटों के साथ, स्पेशली जो रेजिडेंशियल क्लाइंट्स हैं, एंड दैट्स वेयर द फ्रिक्शन इज समटाइम्स. सो द whatever we are thinking is in the service of the client actually, of his sensibilities, his or her sensibilities. So I would never have some preconceived notion in my mind कि अब इस client को ये देना है. It is always comes out of their box. उनका एक बॉक्स है, और उस बॉक्स के बाहर उनके लिए क्या है. What if they come out of their box? So they want to be in their box, right? कि हमारे घर में ऐसा होता है, which is, और ऐसा ही होना चाहिए. That is their lifestyle. So what I show them is what is possible for you just if you make a little tweak. So हमारा एक project हमने किया, it was a renovation project, and बात हो रही थी, struggle, हम लोग मतलब कि कुछ मजा नहीं आ रहा था. चला जा 6 महीने डिस्कशन चले जा रहा है. One fine day we said okay, एक काम करते हैं. I said कि हम ड्राइंग रूम को ना प्लॉट के पीछे ले जाते हैं. Okay. और जो डोमेस्टिक स्टाफ है उसके क्वार्टर्स को ना प्लॉट के सामने ले आते हैं. Okay. ठीक है. अब ये कोई लॉजिकल चीज नहीं है. I would never, as a recipe, I would never say कि ऐसा किसी को भी करना चाहिए.
और जिसको भी मैंने ये बताया है, यू हैव द बेस्ट एक्सप्रेशन रिएक्शन, नहीं तो सबका ना थोड़ा सा फ्राउन हो जाता है कि ये क्या बताया आपने क्लाइंट को. It's So shocked. it is shocking, but it is in. So what happened was there were certain things which were just not working out. So हमने क्या किया कि उनका उनका बहुत बड़ा बैकयार्ड था. It was very precious piece of land, and the domestic staff was occupying the whole of backyard, which was the south, which is Okay. where their son and everything was there. So we took that whole block and we put it on the first floor on the front of the building. और हमारा और जो सबसे beautiful part था वो पीछे था, क्योंकि पीछे ज़मीन ज़्यादा बड़ी थी. And they had huge neem trees and chiku trees and all of that. So we took their drawing room and we put it at In the front back, of that backyard. at the back. और क्योंकि वो पूरा शेडेड था राजस्थान जैसी जगह में, वो पूरा ग्लास का बनाया हमने, फोर Wow. साइडेड ग्लास. Wow. उसमें एक चीकू ट्री था, वो भी उसके अंदर ही हमने इनक्लोज कर दिया. सो दैट वाज इट वाज नॉट अ प्री कंसीव. मेरे एज अ डिजाइनर वो प्री कंसीव नहीं था कि मैंने जब आए तो मैंने सोचा कि मैंने ये बनाऊंगा और ये मैंने बना दिया. इट केम आउट ऑफ us struggling with something which was not working for them, and with this out of the box idea it became superlative. कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज हमारे प्लान करके की थी एंड देन हाँ, इट ऐसा नहीं था कि हमने 50 से हम 100 चले गए, हमने सीधे 200 चले गए, क्योंकि वो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने भी डिजाइन नहीं किया था. बट इट्स सॉर्ट ऑफ, एंड इट इज सुपरलेटिव. आई मीन दैट एक्सपीरियंस इज, आई मीन आई डोंट थिंक आई हैव डन अ बेटर. उसमें मुझे क्योंकि चारों तरफ कांच है, एंड वी यूज्ड, आई थिंक वी यूज्ड your switches, by the way, in that in that project. So that is how it looks like. You know, when I say that out of the box, everybody will go on their own tangent कि out of the box होता क्या, but out of the box ये होता है. Understood. And today my out of the box is very pretty much clear now that how you got that all freedom about that thinking and having that out of the box. See, people generally try to think out of the box, and we use very commonly in conversations when debates or discussions are happening that think out of the box, but and when you try it didn't come. But what is helping you to have that thought process of out of the box? So I think somewhere I forgot to grow up. Somewhere? I forgot to grow up. तो एक तो वो. Okay. और फिर ना मेरे लिए एक, एज ए डिजाइनर आई एम वेरी ग्रीडी इन टर्म्स ऑफ डिजाइन. तो क्या होता है कि जैसे कोई डिजाइन हमने सोचा और बहुत अच्छा लगा दिमाग में, देन इट इज लाइक अ टॉय. बच्चे को टॉय चाहिए ही होता है, लाइक ही वांट्स दैट कि किसी बाय हुक और क्रुक से मुझे मिल जाए जो भी वट एवर द टॉय. सो आई एम लाइक दैट विद डिजाइन. सो मुझे लाइक देयर इज सम इंस्पिरेशन विच विल हैपन, एंड देन इट विल बी लाइक, इट विल रियली एक्साइट मी एज अ पर्सन कि हाँ ये, you know, how will this be if this comes to life. और फिर जो है फिर then I'm unstoppable. फिर वो स्टैंड, और फिर जो भी उसके रास्ते में जो चीज़ें आती हैं, उसका वर्किंग आउट, उसका यू नो डिटेलिंग, ऑल ऑफ दैट, या any resistance from the client or anything which comes in the way, it is so, like, it is so secondary in the way I look at it. Sometimes I feel, मुझे भी मतलब बाद में लगता है कि मैंने कैसे कर पाया कि you know. So in that moment I am very sort of myopic कि मुझे बस वही दिखता है, and then I look at what will come in the way and how will I solve it कि budget, how will I solve it, you know, detailing, how will I solve it, how will I solve it. But फिर वो एकदम it becomes very very, so it is, I don't have to do anything, I just have to, in my case it is like a, जैसे लोगों को laziness होती है, तो मेरे को वो उसका उल्ट, इस वैसे मैं लेजी हूँ जिंदगी में, बट व्हेन इट कम्स टू दिस it becomes very very like aggressive, very or aggressive is maybe relentless is the, like I would be driving, I would be thinking about it, I would be having a bath, I would be thinking about it कि कोई डिटेल है वो नहीं हो रहा है या कुछ सोच रहे हैं, तो वो चलता ही रहता है जब तक वो, एंड इट इज नॉट ऑल, लाइक क्लाइंट्स डू गेट इरिटेटेड. वो मैं भी मेरे क्लाइंट को कह रहे हैं, यार अब हो गया, अब इतना क्या सोच रहे हो, और अभी मुझे घुसने दो घर में. सो लाइक इट इज नॉट, आई वुड नॉट बी वेरी राइचियस अबाउट इट कि हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ तो बहुत अच्छा ही है. Your own self confidence also works very different way altogether in this case, because if you are self confident, something is not happening right now, still you'll make it correct.
लेकिन अगर वो प्लानिंग के बेस पे ही आप उसी चीज में उलझे हुए हो ना, then you'll not never able to get that confidence also. In fact, I think the client reads your confidence level. True. So I remember एक anecdote है, मेरे client हैं, I would tell him कि ये लगाते, and he would say कि नहीं. And suppose if I say कि ठीक है, but suppose I say कि नहीं यही लगाना है, then he would agree. So he always used to test me कि how confident I am or what I am about to say. It is, I think I realized this about 7-8 years ago, that uh, how confident you are as a consultant, how convinced you are. So like some of my juniors or my peers, they ask me that how do you convince clients? How do you, like, I did this project in Jaipur called Fort. It's a restaurant. Port is a restaurant. Yeah, I've been there. अभी ना, तो वहाँ पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सबको बहुत अच्छा लगा, मल्टी अवॉर्डेड प्रोजेक्ट, एवरीथिंग, तो मेरे मोस्टली जो मेरे आर्किटेक्ट फ्रेंड्स हैं, वो मुझे इस बात की ये नहीं पूछते कि कैसे बनाया, वो पूछते कैसे क्लाइंट को कैसे मनाया ये करने के लिए, या हाउ डिड यू मैनेज द क्लाइंट टू लेट यू डू दिस. So it is, I think in that case, during that point of time, I was like supremely confident, and वो जो कन्विक्शन की मैं बात कर रहा था, सुप्रीमली आई वाज ह्यूज कन्विक्शन, बोला नहीं यही करते हैं. हाँ, आई डिडंट हैव टू से दिस. अच्छा, यू डिडंट हैव टू से, कहना नहीं पड़ा, मतलब वो उन्होंने प्रोबेबली व्हाटएवर इन माय बॉडी लैंग्वेज एनर्जी उन लोगों, बट ये नहीं कहा पूरे प्रोजेक्ट में, मुझे नहीं कहना पड़ा कि यही कर. आई थिंक देयर वाज वन प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा था, एंड they wanted to put Italian marble in the banquet hall. इटालियन मार्केट In a very rustic, जो फोर्ट का जो आप देखोगे तो वो all very rustic kind of with random ribbon mason. So that was one time when I said, this will not work, and that is one argument that I had with him, where I said कि नहीं, आप जो शायद मैंने ये बोला, जो आप कह रहे हो कि ये करना पड़ेगा, ये करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, एंड दे लेट मी डू इट. एंड देन अगेन वो हुआ कि उन्होंने बात भी की, भाई ये तो आपने यूज टू का स्टैंड, और आप नहीं बोलते, तो ये अगर हम इटालियन लगा देते तो गड़बड़ी हो जाती. But in that project, there were a lot of challenges. There were a lot of like setbacks during the project. But I was internally nervous. But I would never express. The client would always read in my body language that I have things under control. Sometimes I did not have. But I had confidence on myself कि आज नहीं है, आ रहा है, कल तो हो जाएगा, परसों हो जाएगा, वो confidence था. But so I think that project got made probably because of that kind of a conviction for it. And it was a very risky project. The way now, of course, it's a success story, and now we are doing the 5th one. They are making one. They are making a whole series of these now. And but that point of time, it was very, very, very risky. So So it was the most challenging project for you, the fort. I would say, I think that was the project where we took the maximum amount of risk. Okay. It was, I mean, it was very risky. It is how he brought it. It was totally against the conventional way of doing And all sort of things on. So banquets in Jaipur are by definition rich looking and things like that. And here we had a banquet which was all random rubber masonry from inside. So it was very, very risky. I mean, in hindsight, I also feel कि उन्होंने कैसे बना ले गया. So it was very, so I think that is, and it was, since it was so risky, it is also more satisfying that you took the risk, client took the risk. आप मेरी जेब से क्या जा रहा है, client took the risk on your About always money, it's about your self-confidence also. So you also, I believe, took the risk or your reputation risk, and then it is that you feel responsible for clients' money. yes. It's not that if it is not coming out of my pocket, it is like, it's okay, it's clients' money, and so it is, you feel very, very responsible. I mean, if they would have spent the money that they did and it would not have been a success, then it would have been on me that, okay, मैंने उनको बोला था ये करने के लिए. So that project was very, very challenging, satisfying as well, fulfilling. I think it ticks all the boxes. Can you share an example where you push yourself very much hard on any project to break that's out of the box concept or conventional kind of things?
and I lost the project. Oh. That I lost the project. So you realize what you can do for a project. आपको वो जब फूड के लिए आपने किया और भी प्रोजेक्ट्स के लिए तो घर बनाए उसमें you do sort of look back. आपने क्या सही किया, क्या सही नहीं किया, कैसे आपने how did you communicate with the client? At what point you took a stand that the client को आपने एक डिसीजन से दूसरे डिसीजन पे डाइवर्ट कर दिया और अगर आप उस 1 मिनट में उस 5 मिनट में वो नहीं करते तो things would have been completely different things. So I look at that and my clients also remind me of that कि उस टाइम पे आपने so there was one project where I said okay, you dig your front setback and have a walkout basement. Okay. So they said अरे क्या ऐसा थोड़ा ना होता है लड़के घुसते गड्ढा हो जाएगा और ये क्या होगा क्या नहीं होगा and then for some reason they had a fight at home but they did that and now they thank me for it कि तो आपने बोला था मैं तो घर में खूब लड़ाई हुई but we did this and it is such a lovely space that you have that is there for us in the house. So you can आप में वो whatever that quality you may call about yourself, perseverance or patience or whatever, that you have that quality. So you feel that you should give that to the client. And it is painful होता है वो जब घर बनता है personally it is very taxing but it is supremely fulfilling also कि आप किसी के लिए वो काम कर पाए उसको दे पाए. So I think we do that in all projects. One project where where we were in the project, I thought we had the project and मेरी मुट्ठी में था so to speak. And so I said don't like we were really pushing for this very and it was a big project. वो कोई 80 करोड़ का प्रोजेक्ट से 200 करोड़ का या शायद 150 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया था. And I was demanding my client to take a risk on that. In my naivety, in my bepoofy or whatever foolishness, I was telling him कि नहीं इसको do this. See, and I was pushing him, and then they were not willing to take that risk on that idea, on that bigger project. And मैं really ना मैं अभी भी समझ नहीं पाता हूँ कि मैंने उस मतलब कि would I have done it any other way? कि अगर मुझे किसी और तरीके से करता तो शायद you might get that project और इतने मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर मुझे एक और मौका मिले तो would I do what they were asking me to do and get that big project or would I still stand rather lower project वो मुझे नहीं पता. I don't know frankly. मैं अभी भी sometimes I feel I am like stupid or and sometimes I feel very self righteous कि हाँ यार देखो मैंने तो the project जाने दिया. So it is so that is one thing where I think it was a too big a risk for the client and I was not able to enroll in that idea. so by that idea it was becoming from 80 crore to 150 and 2 crore or the Probably would I have done it much cheaper. मेरी लड़ाई क्लाइंट से होती कि कैसे हम सस्ते में करें. अच्छा हमारी लड़ाई ये नहीं होती कि हम कि मेरे को इतना महंगा लगाना है. उल्टी लड़ाई. Lot of my clients will so I am learning, I think this is my something which I need to learn. So I feel sometimes एक घमंड है डिजाइन अपने डिजाइन पे कि मेरे डिजाइन को महंगे मटेरियल की जरूरत नहीं. लवली ये मैं अभी आपसे बात करते करते this what organized in my brain. It is actually some amount of pride. And what I don't in that pride sometimes I don't appreciate what the client wants. उसको चाहिए कि मैं थोड़ा सा अपना घर बना रहा हूँ क्योंकि मैंने मेहनत से पैसा रमाया है जो भी है लगाऊँ कुछ मटेरियल उसके अंदर ही महंगा लगा दूँ. Because he will do what he can. Like if I'm not a cook, I will tell कि मटर पनीर में पनीर और डाल दो जितना डालोगे उतना मटर पनीर और अच्छा बनेगा. But I'm not a cook. I should understand the nuance of cooking. True. So similarly, any client, it is about putting more and more in that. ये भी लगा दो कि यार गड़बड़ नहीं हो जाए. So I think where I normally try to
maneuver my client is to see what is appropriate. कि अगर इतने की ज़रूरत है आप लगाओ, अच्छा लग जैसे पोर्ट में हमने कोटा स्टोन लगाया, क्लाइंट ready for Italian. So if Italian is required, if it is going with the whole theme, and if I am on board with you putting Italian, then I will look at the story of the house from Italian point. So I think we are from that point of view. I would never pressure my client. I've never pressured my client to put something. I've never upscaled my client. कि आप ये he was prepared for a 500 rupee, and I have done the opposite. I feel more pride in that actually. कि क्लाइंट तो 1000 की लगाने वाला था, मैंने 100 रुपए का मटेरियल लगाया, एंड बिकॉज ऑफ इनहेरिंग टू जो बैक में ये है कि डिज़ाइन मेरा इतना अच्छा था कि वो 100 रुपए का जो मटेरियल है वो 1000 रुपए के मटेरियल को टक्कर दे रहा है. सो आई थिंक बैकग्राउंड में वो चलता है मेरे. So that's where I come from. So again, so I was telling them कि you don't need to spend that 200 CR. So what happened? It was a hotel. They wanted to spend that 200 CR. Correct. And you didn't wanted to spend that 200 CR. Correct. So Where was the... that was the thing. They were so, but the point was when we started that project, it was a low budget 40 CR, 50 CR project. Okay. So we gave them a just for जो है ना उसमें कोई अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं और नहीं लगाता उसमें. It is appropriate. That is what it is. So similarly we designed that project. They liked that project. We went to Delhi. We showed it to all the hotel keys. They loved that project. They said कि ना आप इसको हमारे किसी normal कैटेगरी में मत फिट कर. जैसे कि हमारी अगर मान लो कुकी कटर आ जाएगा तो ये प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा. तो वी विल गिव यू अ सिग्नेचर ब्रांड. खिलते का और इसका मेरे का इसको मिक्स. But as that, and then COVID happened, and then there was some legal issue with the land, and then it took some time for them to eventually start the project. तब तक उनके budgets बढ़ रहे. So when they had पहले 50 crore था, फिर वो जो भी हुआ वो 200 था, 150 था, but it was sizably higher than what we had started off with. So now they wanted to make a 5-star luxury deluxe. I said, okay, we can, the same thing will work there. But they were showing it to whoever they were showing it. They was like, this is not how hotels are, and ये तो बहुत ही है, ऐसा है, ऐसा है. And so I am so कि you do this detailing. So that, so the whole they were not on board with the story. See, every project has a story. So वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी ही होगी. आमिर खान का भी आप इंटरव्यू सुनोगे 100% इट्स ऑल अबाउट स्टोरी. वो स्टोरी है तो डिजाइन का भी स्टोरी होता है. देयर इज अ स्टोरी एंड एवरीथिंग इज इन द सर्विस ऑफ दैट स्टोरी. द स्टोरी इज इन द सर्विस ऑफ द क्लाइंट. बिल्कुल. सो यू हैव टू लुक एट इट लाइक दैट. अगर आपके पास अभी बहुत ज़्यादा पैसे आ गए तो आप उसमें कि जैसे मुझे में वो यू पुट आइटम नंबर एंड लोग तो इट डजंट वर्क नाउ एज अ ऑडियंस. वी वाज 100%. We know हमने इतनी movies, there is not required. It is not required. So that is something which was one example where Any project which is very near to your heart till the date. सारे ही हैं यार अलग अलग तरीके से. बिल्कुल everything has a journey. You invest emotionally in all projects. You have such a good relationship with the clients. So you have, I think emotionally is, for me is whenever there is a tall order and you are not supposed to win. जैसे हम लोग को क्रिकेट मैच कौन से ध्यान रहते हैं, which you are not supposed to win and you win in the last over or last ball. Right. So ऐसे हैं projects where Ford is one of them. Then there's the project called Nightjar, which were like again very very different, very like breaking new ground. So I think they are the projects where when you look back that आप क्या सोच रहे थे उस वक्त, क्या प्रॉब्लम आई, आपने कैसे डील किया, and how involved you were how convinced you were in that project. So I think I would not want to single out a single one. I think but flavors हैं उसके भी. So flavors like the draw का भी वो था ना चाम के आप जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ किया दिया है इसी टेस्ट. Yes. So even that draw is a victory. So I'm not saying any of my verses are draw, but I am just saying that there are different kinds of victories. There are different kinds of fulfillment that you get from a project. Every project got different connections all do to come together. Sometimes you feel कि यार ये तो इतने सस्ते में बना लिया, इतने like such a good value to the client. कई बार ये हुआ कि बहुत जल्दी बन गया, कई बार ये हुआ कि Achievements are different high. All so that already is a very rich thing that you have a different. It's not that you are in one race. You have these different things which you are
fulfillment you get from different types of and so we do very small projects also, big projects also. तो छोटे में भी मज़ा आता है कि आपने so my smallest project is a 10 by 10 shop which we made out of stone glass and what awarded and all of that. So which is one of my very proud of it. Square foot shop has been also designed by you. Love, और एक हमने वो अपने रेस्टोरेंट बनाया था 2 लाख रुपए में 30 डेज में। love. तो वो और वो मेरे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि वो अगेन मैं वो जो पूछ लो कि मेरे पोर्टफोलियो में दिखाता हूँ जैसे इफ आई एम प्रेजेंटिंग एनीवेयर सो दोज प्रोजेक्ट्स आर ऑन दैट लिस्ट दैट ओके दिस हैपेंड हाउ इट हैपेंड व्हाट वाज द स्टोरी दैट वो 10 फुट बाय 10 फुट की जो शॉप की वो कहीं और बन रही थी मैंने बोला यहाँ बना दो पोर्ट्स के ऊपर बना दो सो इट हैपेंड देयर so that itself was that the fact that I could enroll my client into doing that is itself a sense of uh, achievement, fulfillment, satisfaction. As you are coming from the little bit of tech background also in the past, you are talking about cars designs, you're talking about the .com and lots of things on the technology side you have experience in your past also. So how you incorporate technology in design, so any works you do? So I used to be very enamored with technology earlier in my earlier life. Okay. So I used to look forward to technology. अब क्या नया सॉफ्टवेयर, अब क्या नया कंप्यूटर, अब क्या नया. So I was the first iPhone user in India. जब इंडिया में वो मैंने लॉट मंगाया था तो मैंने उसको मंगाया तो वो मुझे कोई गारंटी नहीं थी कि इंडिया में वो यूज़ होगा एंड आई वाज ऑन हिंदी टीवी पर हिंदी टीवी पर फ़ोन किया कि मेरे पास आईफोन है तो बोले आ जाओ भी इंटरव्यू यू So you had the buzz or अब और कुछ लोग और हो गए बट लाइक जो ऑफिशियल तो हाँ लिखने नहीं कर हुआ तो जो वर्ड्स में वही है आई वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वेरी वेरी अर्ली अगर आप मेरे कॉलेज फ्रेंड से बात करोगे और मेरी जनरल रेपुटेशन है ऐसी कि मैं टेक आई लुक फॉरवर्ड टू टेक सो पहले मेरे लिए वो एक एंड था कि हाँ टेक अपने पास फ़ोन हो या ये हो वो नाउ इट इज़ नाउ slowly become like a means it is some I'm looking at what is so I have a maybe 4-year-old iPhone my first iPhone I used for like 6 years 5 years it's not that I have the latest and the greatest every 6 months or every year or even every 2 years I just look at what are my needs and what is the technology available for that need. to fulfill that need so the need comes first कि जो भी क्लाइंट के लिए भी क्लाइंट को ये चाहिए वो टेक्नोलॉजी ऐसी है जो उस नीड को फुलफिल कर सकती है या कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि which can make the client's life easier or convenient or appropriate कुछ और so I think that is my so I am an active I follow technology so I will follow technology blogs I will be updated on what's available कि what is the latest in tech in terms of gadgets in terms of cameras in terms of technology in terms of automation to a certain extent so that I'm updated and तो मेरा daily read वो है तो I will spend maybe 15-20 minutes so अब some blogs I read every day to just see what is the at the forefront so but it is I am no longer like a fanboy of technology I am more कि हाँ ठीक है okay. So how you keep sustainable approach in the designs or the product execution? So by doing less By doing less. if you do less you are sustainable so in the sense for the project not कि आप कम project करो but like for in the project if you can convince the client or get the client on board that suppose वो project ही था 200 करोड़ वाला अगर हम उसको 100 करोड़ ही लगाते तो 200 करोड़ से ज़्यादा आधे से ज़्यादा sustainable है Definitely. Definitely. so I think we are looking and we are generally तो मैं बहुत so I don't think too much about sustainability की sustainable but I see what the basic our regular architecture which we were taught 25-30 years ago which is Indian architecture is sustainable so आपको ये देखना है कि आप कहीं पर you keep in mind कि energy is taken care of so you're not getting too much heat into the your windows are designed like that I tried which I am not successful most of the time कि imported marble नहीं लगाओ local material use करो so in my commercial projects I am successful residential project I am not so successful वो success rate मेरी धीरे धीरे
बढ़ रही है. Now I have some projects where I've used local material and it has been received very well by the client. So I think I have things to show for people too. So I look at sustainability in doing जैसे फोर्ट है, फोर्ट में हमने इंटीरियर किया ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली सस्टेनेबल हो गया. नहीं तो हम उसमें पैनलिंग करते हैं, हम तो कुछ अकूस्टिक ट्रीटमेंट लगाते हैं, बिल्कुल, तो वो अनसस्टेनेबल होता. तो इफ यू स्पेंड लेस ऑन ऑन अ प्रोजेक्ट, then it is generally more sustainable. It's a very good approach. Normally, people and designers also prefer more on the walls and different kind of materials using on that space. So it's making more aesthetical side. वन फील्स है ना, जो हम जो नैरेटिव है मे बी वो ये है कि आप महंगी चीज़ें लगा के सस्टेनेबल बनाओ. कि पहले आप एक ग्लास का डब्बा बनाओ और उस पे आप एक बड़ा महंगा ग्लास लगाओ ताकि वो ग्लास के डब्बे में कम हीट अंदर आने दे. सो दैट इज हाउ सस्टेनेबिलिटी इज. सो यू, आई थिंक यू हैव, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली. यू डू लेस, इट इज सस्टेनेबल. And I just connect it the way you said it कि एक ग्लास का डब्बा बनाओ, उसके ऊपर एक और ग्लास बनाओ कि जिससे वो सस्टेनेबल हो सके. शायद वो डिज़ाइन के अंदर थोड़ा-सा चेंज या आपको वहाँ की अगर लोकेशन या डायरेक्शंस पता है, then you can make it more sustainable out of that also. You don't need to do much more different things to make it sustainable. Correct. You have to be, it's a way of no, I'll take this opportunity on your platform to say no, I was invited to an event. So this is a real story. वो बना ले रहा हूँ. तो it was a company who sells faucets. So they invited us कि सर कुछ event है. And for some reason I did not say no. Normally I would say no. I went. It was in Goa, known to Goa. There was talk about saving water and this and sustainability and that. Then they gave us, there was some exercise where there was a sheet of paper. Everybody got a sheet of paper and they had to color it. They're all architects, 50 odd of us. So we all colored, and then it was, the thing was, it was put up on a wall. Okay, and it said save water, save planet or something like that. I don't remember exactly. Some sustainable message. And they gave us paint and to do that. तो इधर तो फोटो खींची, everybody had photo ops कि हाँ ये है, ये sustainable है, ये है, वो है. And if there was a camera which was focused on this side, it was filled with trash. क्योंकि सबको प्लास्टिक के डब्बे में, और they gave us paint. Yes. So हम लोग ना अभी सस्टेनेबिलिटी के बाद हम लोग इस जैसे प्लेन से जाएंगे 5 स्टार होटल में एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बैठ के, एंड वी टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी. सो वो एक इट्स फैशनेबल टू टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी. जी हाँ, लेट्स टॉक अबाउट इट. आई थिंक सबको थोड़ा अपने गरिबान में झाँकना चाहिए और डू योर स्टफ ब्रो. आई वुड से डोंट टॉक अबाउट इट, डू जो आप कर सकते हो. आप whatever minimum you can do. अगर आप कचरा रोड पे नहीं फेंक, नहीं, कितने से तो शुरुआत करो. And do that at least. I think if somebody, ये सब वाइट वॉश, जो ग्रीन वॉशिंग अब तो इज अ वर्ड कि आई थिंक ग्रीन वॉशिंग ज़्यादा है. और and I think we are very aspirational in India that we want to show the money and everything. So वो एक, I don't know how we architects will deal with that. So what do you think? What would be industry would be moving and as a architecturing or modern designs after 10, 50 years in India? See, architecture is a reflection of our times. जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है वही हमारे आर्किटेक्चर में हो रहा है, वही हमारे सिनेमा में हो रहा है, वही हमारे पॉलिटिशियंस भी है. They are reflection of us. So I don't know, and we are living in time of accelerated change. So it is we are now changing by the year. Things will move. So we will, I don't know how we will cope, what will happen. And it's scary and it is exciting also. The same time, I remember जब हम लोग this talk about AI and all of this. So when we were in college, there was this huge debate about CAD. एक कंप्यूटर होना चाहिए, आर्किटेक्चर में नहीं होना चाहिए, हैंड ड्राफ्ट होनी चाहिए. ह्यूज डिबेट्स जैसे आजकल ये भी हो रही. यस. सो अब वो डिबेट खत्म है. सबके ऑफिस में क्या है, एवरीबॉडी इज कैड. एंड यस, किसी का काम आसान नहीं हुआ है और हम काम ज़्यादा कर रहे हैं और हम लास्ट मिनट तक चेंजेस कर रहे हैं.
पहले क्या होता था कि डर होता था कि यार चेंज कर देंगे तो ये पूरी ड्राइंग दोबारा ड्राफ्ट करनी पड़े। बिल्कुल अब है कि यार नहीं, ये लोग कर लो। सो द वर्क हैज नॉट बिकम लेस। CAD did not make it any work, work amount. It made certain things easy, but the total amount of work actually has become much more. I would say rework has been increased. कि भाई आप एंड तक सोच सकते हो, आप एंड तक सोच सकते हो, एंड तक आप सोच के कुछ चेंज कर सकते हो। सो आई डोंट नो हाउ विच वे एआई विल गो, आई डोंट नो। आई हैव मैं थोड़ा बहुत मैंने देखा है हाउ एआई वर्क्स। अभी तो बहुत इन्फेंसी में है, बट इट इज आई डोंट नो हाउ आर्किटेक्चर विल बी, हाउ what will be the social impact on people, and how they will. What would you like to say the young architects who are just studying today or who are starting their journey and the career? What would you like to say that? They are in the best profession in the world, so I think if they have the privilege of being in the design profession, and I'm sure सबको जितने भी डॉक्टर्स को भी ऐसे ही लगता होगा, और वो है ही, मतलब सबको लगना चाहिए। आई थिंक आई फील आई एम इन द बेस्ट प्रोफेशन। आई थिंक दे शुड एंजॉय इट। अगर आपको इस प्रोफेशन में एंजॉयमेंट नहीं है तो मत look left, right? It is supremely satisfying, fulfilling. You can enjoy the process of creation, of design, of engagement, of friendship, with your clients, with your people who work on the site. So it is such a it is so refreshing every day. You meet new people, get new perspectives, you learn from, you're not on a high throne that आपको ये सब कुछ पता है. You are every person you can learn from. So your learning can be endless. You can कुछ भी आप सोच सकते हो, कुछ भी आप बना सकते हो. किसी को भी आपके पास विद प्रैक्टिस पावर है कि आप किसी भी influence the greatest part. So we have the exercise influence in terms of. So it is it's wonderful. I mean, So I would say that love what you are doing, and if you are loving that, then keep doing it. Yes, don't think too much about that what will happen. And today the time is not supporting you, or you're not in the right position. Then time will change. But keep doing whatever you're doing today. I think very rightly you put. I think I love design. So मुझे how I've sustained myself is that I जब आप प्यार करते हो तो आपको कोई लेफ्ट राइट नहीं दिखता. Then you are very single focused, single minded about whatever it is. Whether you love a person, if you love a person, you make so many exceptions for that person. फिर आप इसको एम ही देते हो उस पर्सन को, लव करते हो, बस कहानी खत्म है. Logic सारे end हो जा रहे. But if you are able to in this profession, if you are able to in this I don't know profession कहें या क्या, like what one can call this, but if you can love it, then there is nothing better. Better meaning this in the word. Let's move forward for the second part of the episode. Your favorite architect of the all time. I would go with Santiago Pareto. One project in India you wish you had designed. Limbi Rashpati. I mean, this parlor, the new parlor. New Palette, designed by Dibal Patel and designed by Kena Patel. Concrete, steel, glass, or wood? Which is your favorite? Bicycle. It can take compression, tension, and speaking technically, so strength तो concrete में भी होती है, but एक ही टाइप की होती है. वो होती है compression. और wood में warmth है, और उसमें उतनी strength नहीं जितनी steel में है. Glass तो रहती है. So steel is the most versatile material and it has its own problems. But I would say, given the choice and the format of this Q&A, I would go with steel. Like, I had to pick up between the four. If we remove this four, then which is your favorite? So I don't think we can have, as designers, we cannot have favorites. We have to go by the merit of the material for the particular block. Minimalism or maximize? A city that inspire you the most? Jaisalmer. What is so special about this? वो तो बयान नहीं किया जा सकता, वो अनुभव किया, उनकी एक्सपीरियंस किया था. कॉफ़ी और चाय वाइल डिज़ाइनिंग? वैसे तो मैं कुछ दिन पहले तक टी टोटलर भी नहीं था,
Okay. but I would say coffee. Early morning works or late night? Late night. Late night. Mountains or beaches for the vacation? Mountain. Mountains. Why mountains? So I was a very avid trekker in my early school time. Beach is like more monotonous, na? Yes. वही Yes. आ रहा है. Mountains are more detailed और also. mountains में like it's like I can't it does something to me जब mountains, you know, it is the whole scale of the mountain, and फिर कुछ बचपन की यादें हैं जो मेरे कुछ बचपन के सबसे पहले accomplishments जो थे वो mountain से जुड़े हुए हैं. Okay. So when I was not even 12, there is a peak called Zero Point near Pindari Glacier. So in our group, I was one of the youngest to scale that. So that was my very first accomplishment which I can remember as a So human there's a very being. deep connection with you, हाँ, with the mountains. yes. Got it. A book that has influenced you. So I haven't read any book actually. The only book that I have read was Fountainhead, which did not influence me. So it only scared me off architecture. So I get influenced quite a lot, but I no book, No books. no book that I remember. I don't read. I'm more of a, like, I would listen to podcasts and things like that. I don't. Unfortunately, I don't read. One thing on your bucket list which is apart from the architecturing. Many actually. So one is making a movie Making a on movie. SPA. On SPA. Okay. My college. So some script I have in mind. Wow. So एक वो है bucket list पे. You know, I wanted to do a car, so maybe I would want, like, अगर Yes. कभी Yes. मिले. Designing the car. Furniture में करता आया हूँ, but I want to do that on a more intentional, more professional way. So quick choices. Sketching on paper or digital tools. Sketching on paper. Functionality first or aesthetic first, but I know that answer, but still I'm asking you. I would say functionality, but it's क्योंकि you are giving me only one option, then I would say functionality over. So aesthetics is all my opinion. Aesthetics is also a functionality. Yes. So I don't think there is any वो अलग नहीं है. Specific. वो अलग हाँ, नहीं है. वो- it's a part of that only. Yes. And if the thing is functional but it's not aesthetic nowadays, then it's also not. होना ही चाहिए ना. Aesthetic क्यों, like, I don't think it can be either or. I mean, it is, I mean, you can't take one away from the other. So we are sitting on the city of the whole heritage. So what would you like to select? Jaipur's heritage or modern skyscrapers? Jaipur's heritage. And I paused before I spoke is because you said skyscrapers. So if had you said like a modern township or something, I would probably. So heritage and modern is, again, it doesn't make that much of a difference. वो तो skin का color है. True, true. Depending on how something is designed. Like, so if you see Jaisalmer and if you see Jaipur. So अगर मुझे रहना हो तो शायद मैं skyscraper में रहना पसंद करूं. लेकिन अगर मुझे walk करना हो, I would prefer walking in Jaisalmer or Jaipur. Definitely not walking in Gurgaon. Got it. Awards or client smile? Client smile. Lovely. No doubt about that. And the next question, I know that partially I know the answer. If you are not an architect, then what would you be today? So I might have been in films. Okay. अगर मेरा वीज़ा हो गया होता हाँ. तो मैं अमेरिका चला जाता और फिर मैं वहाँ पर मास्टर्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स करता. तो हो सकता है I might have gone that tangent. But I am so happy that visa got refused. And now that I look back, जो मेरी strengths हैं, जो मेरा, like, जो acumen generally मेरे में है, it is so I use both the left and right side of my brain in my. It's properly said by the I can't God. imagine now doing something else. So I am inclined towards the art, that I've been in dramatics and singing and graphic design and all of that. But I think architecture sort of, कहते हैं ना, architecture is mother of all arts. So you are at a very nice, and cinema is the daughter of all arts. Cinema is the daughter of all arts. So because all of architecture से सारी arts निकली, Right. और cinema में जाके समा गई. Right. Because you have music, you have everything is there. True, true. So I think या तो इस पार या उस पार होते. और but I feel that my sensitivities are more. I would have not made a very good
anything in the in that industry. I think I would be like a purza in the whole mechanism. And here I have the opportunity to really make a difference. I believe one day you will also complete that bucket list of making that film. So I will be part. So मेरे जो so I did not tell you this that मेरे जो gang था, Hmm. so more than I am the only architect in my gang. Okay. और 3 मेरे gang members हैं जो कि 2 तो वेटा में हैं. वेटा इज द कंपनी जो पीटर जैक्सन की है जिसने अवतार बनाई है. एंड 2 people are one friend of mine. She's was the lead super. We are talking about that person who went to foreign. New Zealand. Yes. No, while- that is he was a technical background. Okay. So he is in a company. So 3 of my friends are in now computer graphics studios. Okay. और अभी so they had recently sent me a video that we are in this because you inspired us to be. Because उतना मैं तो अमेरिका आया तो मैंने देखा कि ऐसी कोई चीज़ हो भी सकती है. And then I was doing stuff that I was doing in college. So and सब हम लोग एक दूसरे का काम, like the good thing in design is that you see each other's work and each other's work is so inspiring. So they are all into that and I am what I am doing and I'm so happy for it. I mean I can't now imagine having done anything else. Lovely, lovely, lovely. And thank you so much for coming today here. And it was a very, very, very heartful conversations we had today. So I mean I must thank you and I must acknowledge you for enduring my verbal diarrhea. so much I spoke today. So our professor in college used to use this word, verbal diarrhea. So thank you so much for having me, and I had a lovely time, and I remembered so many things from my early days, and so many of my, in answering your question, so many thoughts got sort of restructured in my in my conscious, that why I do certain things. They were not clear to me. So in answering your question, some of them got cleared to me. That's good. That God of the grace, we learned that something, and it is helpful for you also. So Yes. it's loving. It's loving. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thank you.